Good morning, good afternoon and good evening प्यारे बच्चों. In this lecture we will be concentrating in the forces which basically acts when a body moves on circular path. And but obvious, as we are passing through friction, we are studying friction, so we will also be concentrating in how the force of friction acts in different cases as the body moves around the circle. I will be taking uniform circular motion in account. Okay, non-uniform I will not be taking. Fine. Already we have discussed uniform and non-uniform circular motions. So what all forces basically act. Okay, so that is a thing of previous knowledge now. So brief I will be taking here. So going ahead with uniform circular motion, dynamics of uniform circular motion. This is a very simple question. How a body is able to move on circular path? You just pause the video and think on. Now, at this stage, your brain must respond. I'll say must respond. Okay. Body is able to move on circular path because of a force which act in radially inward direction, which acts in a direction radially in towards the center. Okay, body is here, velocity is in this direction. This is a force which is acting on the body. When this force pulls, the direction of the motion changes. Like this. At every point, this force acts and changes the direction of velocity without changing the magnitude. You just think, हमने इस force को क्या कहा था? Now you see the situation of the circular motion. Direction of velocity is changing from point to point. As the direction of velocity is changing, so who is responsible? This radially inward force. Okay, this radially inward force which is pointing towards the fixed point, changing the direction of velocity only. It's not affecting the magnitude of the velocity. Okay. And we named this particular force as force centripetal. Centripetal force. You just go through this. Pause कर लो और go through करो इसको जल्दी से. The point to point change in direction of velocity vector without change in magnitude of velocity is done by the radially inward force acting on the body all the time when the body moves on circular path. And we named this particular force as centripetal force. Yes. Now, because of change in velocity vector, an acceleration came in the frame and we have defined that particular thing. What was that acceleration? The acceleration in the situation due to change in velocity vector from point to point. We named this particular thing as centripetal acceleration. कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को. Is called centripetal acceleration. It's okay. We calculate the magnitude of centripetal acceleration also. Yes, when the body is moving around circular path with velocity v, magnitude of velocity v, and angular velocity के form में भी हमने relation derive किया. What was that relation? Just think of. Centripetal acceleration was equal to v into omega, if you remember. V is the magnitude of velocity
with which the body is going on circular path. In fact, this is the constant. Uniform circular motion we are talking of, and omega, angular velocity. When we replace this omega as v is equal to r omega, so centripetal acceleration can also be written as v into omega का value I am placing as v by r. So this implies centripetal acceleration is equal to v square by r. Yes? And also we have done this particular thing from the same relation. If you are placing the value of velocity, then centripetal acceleration, you must have done something like this. V velocity is equal to r omega into omega. This implies centripetal acceleration is equal to omega square r. You must be remembering this all. These relations already we have done, okay, and we have understood the things in detail. Okay, when or in which case the centripetal acts, only centripetal acceleration act, and the other case we have discussed with the non-uniform circular motion. उसमें एक और acceleration आया था. Just think of the name. I'll not name that. You just think. And if you are unable to think, okay, go through the previous lecture where I have introduced the circular motion. Motion in plane का last part was circular motion. Okay, now if acceleration centripetal acceleration is like this. Let the body has mass m, body which is undergoing circular motion, if that body has mass m, now we can write the magnitude of centripetal force also. If the body have mass m, then centripetal force acting on the body, force is equal to mass into acceleration. So centripetal force is equal to mass into acceleration, that is v square by. The direction of this particular force will be along the radius towards the center, radially in. And also we can write centripetal force as acceleration is omega square r, so mass into acceleration m omega square r. It's okay. This force is the necessary force. We discussed this particular thing. This force is the necessary force which must be acting on the body to take it around circular path. If this force will not be acting, the body can't move on circular path. It's okay. Now we know this thing, why a body moves on circular path. Now the next thing is, as a body moves on circular path, bodies, okay, they move outward. They move outward. You just situation थोड़ा explain कर देता हूँ, okay? Then you will be understanding this question very well. Suppose I have a disc. ठीक है? डिस्क के नीचे एक मोटर लगा हुआ है और वो डिस्क को इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से इट इज रोटेटिंग. ये मोटर इसको घुमा रहा है, ये डिस्क है. ओके, अबव दिस डिस्क, इस डिस्क के ऊपर, ओके, अ कॉइन इज प्लेस्ड. ओके, a coin is placed. यहां पे कॉइन, 5 rupee coin. It's okay. कॉइन, ठीक है. जब ये डिस्क आपका स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा, ये कॉइन पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ इस तरह से डिस्क के साथ साथ राउंड करेगा. ओके, बट
as you will be increasing the rotational speed. ठीक है, increase करेंगे. What will be happening? This coin, okay, will have a tendency to move like this. ऐसे. Okay, coin tend to move on this path. Okay, disk is rotating with sufficient velocity. Okay, ये कॉइन का जो है टेंडेंसी, इट टेंड टू मूव, मतलब जब स्पीड कम होता है इट टेंड टू मूव, मतलब मूव नहीं कर रहा है लेकिन कोशिश कर रहा है मूव करने की. एज यू इंक्रीज द वेलोसिटी, ये रेडियली बाहर, आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड फॉल करता है. यू थिंक ऑफ द सिचुएशन, यू आर गोइंग इन अ कार. ठीक है, when that car takes a turn around a circular path, okay, कुछ ऐसे कार घूम रही है इस पाथ के ऊपर. फाइन, यू आर इन कार. ठीक है, तो यू आर इनसाइड कार, तो एक फोर्स आपके ऊपर लगता है इस तरह से बाहर की तरफ. ओके, दिस इज द सेम फोर्स जो कॉइन के ऊपर लग रहा है. Okay, coin tend to move or move in the direction of marked arrow. Now, if you are sitting inside the car, you will tend to move or move. अगर velocity बहुत ज्यादा होगा और somehow गाड़ी का डोर ओपन हो जाए, तो you will be thrown out in the direction of arrow. Okay, think of this particular situation. जब आप giant wheel पे बैठे हो, when you are sitting on a giant wheel, क्या होता है? Feel the situation. Giant wheel पे आप बैठे हो and this is going around. ठीक है, क्या होता है? Your seats are pushed like this. अब you sitting on the seat. Okay, seat इस तरह से घूम के आपको radially outward push करता है. Like this. Like this. Okay, now the question arises, why? ऐसा क्यों होता है? Just think on. Now, ये जो question है, it is asking the same thing. As body moves on circular path, why it has a tendency to move out, radially out from the circular path? जिस circular path के ऊपर centripetal force, ओके, उसको लेकर जा रही है, ओके, उस पाथ से बॉडी रेडियली आउटवर्ड मूव करना चाहता है. इट ट्राइज टू मूव एंड इफ द वेलोसिटी इज सफिशिएंट इट मूव्स. जैसे एक कॉइन स्लिप कर जाता है. ठीक है, गाड़ी में बैठे हैं, अगर स्पीड सफिशिएंट है, रेडियली आउटवर्ड यू आर थ्रोन. दैट पर्टिकुलर थिंग आई एम ट्राइंग टू see. Why we feel this radially outward force? Now, inertia of direction, you know it, Newton's first law of motion that says body का tendency है अपने situation को, अपने state को retain करने का. If it is going along a straight path, it will keep going along the straight path. Okay, अब ध्यान देना. Body is here moving with velocity v. उसका velocity का direction is along this. सेंट्रीपिटल फोर्स ने एक्ट किया. सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. सेंट्रीपिटल फोर्स हैज चेंज्ड इट्स पाथ फ्रॉम दिस टू दिस. फोर्स ने इस तरह से एक्ट किया तो ये बॉडी ऐसे बन गया. ओके, ये जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है ना, अब ये बॉडी का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया ना बाय अप्लाइंग फोर्स, लेकिन बॉडी उसी सिचुएशन को रिटेन करने की कोशिश करती है. जरा ध्यान से सोचो, आपको बताया था कि इस इनर्शिया के कारण जो ये स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी रेजिस्ट द चेंज. बॉडी रेजिस्ट द चेंज, मतलब ये फोर्स जो रेडियली इनवर्ट एक्ट कर रहा है, ये फोर्स उसको उसका वेलोसिटी चेंज करके इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, लेकिन ये बॉडी जाना नहीं चाहती है, रेजिस्ट कर रही है चेंज को. समझ में आया?
तो ये डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द बॉडी इज गोइंग अराउंड सर्कुलर पाथ, ओके, जो ये डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस पोज कर रहा है ड्यू टू इनर्शिया, ओके, ये बॉडी को आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड मूव करने का टेंडेंसी देता है, जिसके कारण बॉडी ट्राइज टू मूव रेडियली आउटवर्ड। एक फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, सो एज द बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो ये जो रेडियली आउटवर्ड फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, ठीक, दिस फोर्स बेसिकली इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। Due to this particular force, the body is thrown out basically. Body is thrown radially out. Got it? This happens because न्यूटन लॉज हैं हमारे, वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर वैलिड है, ठीक है, ओके। यहां पे दिस इज रोटेटिंग, ये डिस्क वाला केस ले लो, डिस्क के केस में बॉडी रोटेट कर रहा था, तो क्या वो इनर्शियल फ्रेम है? Non-inertial frame, because all the time the body as the body is going on circular path, all the time there is an acceleration, तो non-inertial accelerated frame, ठीक है। और when this particular body is placed in a non-inertial frame, उसके ऊपर ये radially outward force लग रहा है। This is happening because of non-inertial frame. Or other way, you can think of that way, कि because of directional inertia of direction, this particular thing is happening, that the body is feeling a kind of force outward, radially outward direction. This force is acting on the body because the body is going on circular path. अगर body circular path पे चलना बंद कर दे, radially outward force लगना बंद हो जाएगा। Got it? Now, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? देखो ध्यान से, सपोज द बॉडी इज हियर, इनसाइड लग रहा है फोर्स सेंट्रीपिटल, ठीक, बाहर की तरफ लगा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल, जो उसको रेडियली आउटवर्ड पुल कर रहा है। सबसे पहली बात, व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? अब ध्यान देना, ये दोनों फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल से ज्यादा हुआ तो ये सर्कल धीरे धीरे आउटवर्ड मूव करने लगेगा और बॉडी सर्कल छोड़ के बाहर चली जाएगी। अगर रेडियली इनवर्ट वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो ये धीरे धीरे करके सेंटर पे कोलैप्स कर जाएगा। इफ आई एम हैविंग, ओके, body moving on circular path of constant radius, ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक प्रॉपर लाइजन होना चाहिए। मीन both should be able to balance each other, okay, तो if your force centripetal is equal to mv square by r radially in, then force centrifugal should also be having the same magnitude but should be acting radially out. It's clear? Should be acting radially out. आराम से पॉज करके इसको थिंक ऑफ द सिचुएशंस, जो मैंने सिचुएशंस बताई हैं। These all situations will take you to, okay, कि centrifugal force exists. Centrifugal force exists as the body moves on circular path. In some of the cases, this is written कि this is a fictitious force, pseudo force, है ना? This is a force यार, बस this is a force, fictitious नहीं है. It is acting on the body because the body is moving in a non-inertial frame. आराम से इसको पॉज करके रीड करो. Centrifugal force act on the body when
body in radially outward direction when it moves on circular path. Now, it acts on body due to inertia of direction. As the body tries to regain its actual straight line path. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसका डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन, बॉडी अपना स्ट्रेट लाइन मेंटेन करके रखना चाहती है. इट इज रेजिस्टिंग द चेंज बेसिकली बाय हैविंग दिस पर्टिकुलर फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Now, the magnitude of centrifugal force has to be equal to centripetal force. Because centripetal force is taking the body around the circular path now. Okay, so centrifugal force has to be equal to that. Only in that very situation the body will be able to move around the circle of constant radius. अगर दोनों में से कोई भी कम ज्यादा हुआ, अगर कम हुआ तो slowly steadily the radius will reduce and the body will collapse at the center. And if the radially outward force will increase, the radius will slowly steadily increase and finally the body will be leaving the circular path. It's okay? So hope you have understood the basic facts about centrifugal force. So go through the content, and if still you are finding any kind of confusion, let me know. Thank you. Have a nice day.